इंटरेस्ट इनकम को हाउ वी हैव टू शो, कैपिटल गेन इनकम है, वी हैव द म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी शेयर, बिकॉज in today's scenario everyone is making some transaction in demat account. I have purchased A limited company, I have purchased B limited share, and once it has been increased तो मैंने उसको sold कर दिया. Suppose that I have purchased any share in 100 rupees, I have sold in 125 rupees. So 125, 100 or 125 for whatever the difference, that is the 25 rupees difference. So it will be considered as short-term capital gain, or it will be considered business income, or it will be considered as the long-term capital gain. If it is a long-term or short-term, or it is the business income, how we will disclose in ITR, or whether there is any requirement to disclose or not. Yeah, we have to see each and everything. So today just we have whatever the question we will solve, or query we can solve. Just I am saying, just I am displaying all those things. Interest income है तो what we have to do, we have the capital gain, what we have to do, we have exempted income, what we have to do. If we have two jobs during the year, suppose that April to June मैंने एक जगह काम किया, after July I have changed in another job. मेरा पहले 10 lakh का CTC था, now I have to and join CTC of the 30 lakhs, 40 lakhs या 50 lakh, whatever, whether it can be 10 to 11 lakh भी हो सकता है. So I have 2 jobs, 3 jobs during the year, तो उसका क्या करना है, how we have to calculate taxes. Sometime when you are making when you are filing your income tax return, तो sometime क्या होता है कि additional tax आ जाता है, 4,000 का, 5,000 का, 20,000 का, 50,000 का. तो what we have to do, उस सिनेरियो में हमें क्या करना है, ठीक है. इफ यू हैव असेट एंड लायबिलिटी, तो ये हम कैसे डिस्क्लोज करें, जितने भी हमारे असेट एंड लायबिलिटी है इसको हम डिस्क्लोज करना है, नहीं करना है, और व्हाट इज द राइट फॉर्म टू चूज. तो ये सब सवाल है. अपार्ट फ्रॉम यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लो, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ तो सबसे पहला जो सवाल मैं लिख रहा हूँ, चूज राइट फॉर्म, तो ये हम बाद में करेंगे. उससे पहले वी विल डिस्कस अबाउट सम अनदर क्वेश्चन. लेट अस स्टार्ट विथ व्हाटएवर द इंटरेस्ट इनकम इज कमिंग फ्रॉम सेविंग एंड एफडी अकाउंट. ये हमें शो करना है कि नहीं. तो इट इज माय पर्सनल एंड प्रोफेशनल एडवाइस टू यू, वेदर यू हैव इंटरेस्ट इनकम ऑफ 1 रुपीज, 1 लाख, 10,000, 15,000, जो भी है आपको शो करना चाहिए. आपके पास यू हैव द 3 and 4 सेविंग अकाउंट, लाइक एक बैंक ऑफ बड़ौदा में है, एक पीएनबी में है, एक एचडीएफसी में है, यू हैव द 1 अकाउंट इन एस बैंक. मतलब जहां जहां आपके पास सेविंग अकाउंट है, एफडी अकाउंट है, जो भी है आपको शो करना चाहिए. और ये व्हेन यू आर फाइलिंग योर रिटर्न, तो सम टाइम वो अपने आप ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेता है, अदरवाइज दे हैव नॉट पिकअप द ऑटोमेटिकली. देन यू हैव टू फीड. व्हाट यू हैव टू डू, जितने भी सेविंग अकाउंट हैं, यू हैव टू कलेक्ट बैंक स्टेटमेंट, एंड एवरी बैंक स्टेटमेंट यू हैव टू फाइंड आउट इंटरेस्ट इनकम, जो क्वार्टरली बेसिस पर दे हैव क्रेडिटेड फ्रॉम बैंक. इट कैन बी 2,000, it can be 10,000, it can be 20,000, it can be 30,000. वो फिगर लेके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में यू हैव टू डिस्क्लोज. इन एफडी अकाउंट, सपोज दैट यू हैव सम फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ द 1 लाख रुपीज, 30,000, 2 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज. बैंक इज पेइंग सम इंटरेस्ट टू यू. उस इंटरेस्ट के ऊपर बैंक ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिडक्शन कर रखता है टीडीएस का, वो दैट विल कम फ्रॉम 26 AS. तो whatever you have interest income in saving account, in FD account, वो आपको शो करना है in your ITR. और ये कहाँ पर शो होगा, it will be the show in income from other source. ये जो interest income होगा, it will be shown as the income from other source. Capital gain on share and mutual fund. तो म्यूचुअल फंड एंड शेयर पर आपको 2 चीज मिलता है. 1 इज द डिविडेंड,
और यू कैन से इंटरेस्ट, मतलब कि रनिंग अमाउंट मिलता है डिविडेंड, एंड सेकंड इज व्हेन यू सोल्ड आउट। सपोज दैट आई हैव परचेज्ड वन म्यूचुअल फंड ऑफ 10 लाख रुपीस और ड्यूरिंग द ईयर मैंने उसको सोल्ड कर दिया। अब उसका जो यूनिट वैल्यू है, यूनिट वैल्यू इज कमिंग 10,50,000। तो मैंने 10 लाख का चीज 10,50 में बेचा, देन आई हैव इनकम ऑफ 50,000 रुपीज। और ड्यूरिंग द ईयर म्यूचुअल फंड या शेयर मेरे को डिविडेंड पे करता है, पे आउट करता है। तो वो डिविडेंड तुझे कहाँ से करना, तो व्हाट एवर यू हैव डिविडेंड फ्रॉम शेयर और म्यूचुअल फंड, वो डिविडेंड आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। और यू हैव सोल्ड, सपोज दैट यू हैव परचेज इन द 10 लाख रुपीज और यू हैव सोल्ड इन 10,50,000 रुपीज, जो ये डिफरेंस है 50,000 का, इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन, और ये आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड में शो करना है। और अब ये आता है क्वेश्चन, बिकॉज व्हेन यू आर फाइलिंग आईटीआर रिटर्न यू विल से कैपिटल गेन का जो स्ट्रक्चर है, यू विल फाइंड आउट ये शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। तो इट विल डिपेंड कि इस जो शेयर है, म्यूचुअल फंड है, उसको आपने कितने दिन होल्ड किया है। तो अगर यू हैव होल्ड मोर देन 1 ईयर देन इट विल बी कंसीडर एज द लॉन्ग टर्म, और लेस देन 1 ईयर इट विल बी कंसीडर एज शॉर्ट टर्म। जैसे आज से मैंने 2 मंथ पहले परचेज किया है, नाउ आई एम सेलिंग, तो ये शॉर्ट टर्म आएगा। लेकिन यही इक्विटी और म्यूचुअल फंड आई हैव परचेजेस इन 2015, 2016, 2020, मतलब 1 साल पहले मैंने परचेज किया है और आज होल्ड आउट कर रहा हूँ, तो इट विल बी द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगता है दैट इज द 20%। इन केस ऑफ द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आपका जो भी इनकम होगा, वेदर यू आर कमिंग इन बास्केट ऑफ 20%, वेदर यू आर कमिंग इन बास्केट ऑफ 30%, वो आपके इनकम में इंक्लूड कर दिया जाता है और उसके ऊपर टैक्स लगता है। असेट एंड लोन, यू हैव सम असेट लाइक हाउस प्रॉपर्टी है, आपके पास कार है, यू हैव गोल्ड है, और यू हैव सम लोन लाइक हाउस प्रॉपर्टी का लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है। अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको आईटीआर में शो करना है कि नहीं करना है। When you are filing ITR 1, then there is no scope, there is no detail where you have to disclose asset and loan का ऐसा कोई डिटेल नहीं आता है, ठीक है। When you are filing ITR 1, there is no need to disclose any asset, there is no need to disclose any loan। लेकिन जब आप ITR 3 या ITR 4 या ITR 2 फाइल करते हो, then there is some columns where you can disclose how much asset you have, like you have house property, वो भी disclose करना होता है, you have business loan, you have house property loan, you have car loan, तो वो सारा चीज का कॉलम पूछता है कि how much you have secured loan, how much you have unsecured loan। लेकिन जो जॉब में है and that person is filing only ITR 1, आपके पास चाहे कार लोन चल रहा हो, बिजनेस लोन चल रहा हो या एनी अदर पर्सनल लोन चल रहा हो, there is no need to डिस्क्लोज दैट लोन अमाउंट, क्योंकि आईटीआर 1 में वो डिस्क्लोजर कहीं पर आता ही नहीं है। exempted income, now we will discuss about exempted income। there is some income in your hand जो exempted होता है, like you have deposited some amount in PPF, public provident fund और provident fund, you are doing job, आपका जो एम्प्लॉयर है he is deducting some money and that money is deposited into provident fund। तो provident fund में suppose that this year I have deposited 50,000 rupees, last year I have deposited 50,000 rupees, last to last year I have deposited 50 या 60,000 rupees। तो government और बैंक is paying some interest on PPF account और PF account। तो जो लास्ट 2 and 3 या 4 years में they are providing 50,000, 60,000, 70,000 whatever amount I have deposited in provident fund or public provident fund, तो government is paying some interest। तो इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आता है that is the exempted income। it means whatever income is earned in PF account, provident fund account or public provident fund account, there is no taxation। आप दिस इज द एग्जम्प्टेड इनकम, और इसको आपको टैक्सेबल इनकम में नहीं लेना है। इफ यू वांट टू डिस्क्लोज, ये आप एग्जम्प्टेड सोर्स का एक कॉलम होता है, वहां पर यू कैन डिस्क्लोज, अदरवाइज दिस अमाउंट विल नॉट इंक्लूडेड इन आईटीआर। अब मैं जस्ट आई एम गिविंग द वन एग्जांपल, योर सैलरी इनकम इज 11 लाख रुपीस और यू हैव इंटरेस्ट
in PPF account, that is the 1 lakh rupees. So your total income is the 14, but in ITR you will show only 13 lakh rupees, और इसी 13 के ऊपर you have to pay taxes, और ये जो 1 lakh rupees है, it will be the shown in the exempted column. Exempted का एक column होता है, वहां पर you can disclose. So income tax department will not charge any tax on that interest on PF और interest on PPF account. तो exempted बहुत सारे इनकम होते हैं, जैसा एक मैंने ये बताया, there is some government bond, RBI का बॉन्ड होता है, that is the exempted income. तो इस तरीके से कुछ इनकम होता है exempted, जिसके ऊपर there is no taxation, वो आपको वहां पर शो करना होता है. Asset outside India. Suppose that you have one bank account in Dubai, you have one bank account in USA, you have one bank account in Switzerland, Australia, US, but anywhere outside India you have any bank account, you have any house property, any kind of the asset or loan you have outside India, that you have to disclose. ये आपको disclose करना पड़ेगा, चाहे उस बैंक अकाउंट में $1 ही क्यों ना हो. Whether you have $1, तब भी आपको disclose करना पड़ेगा. If you have any bank account, you have any asset, you have any equity, you have any mutual fund, मतलब whatever the asset you have outside India, ये आपको ITR में disclose करना ही पड़ेगा. Now, now we come choose right form कि हमें कौन सा ITR फाइल करना चाहिए when we have to file our ITR. So when we have only salary income, when we have only salary income and we have the bank interest, so we can choose ITR 1. As you are seeing on screen, it is ITR 1 to ITR 6. So for individual, you and me, male or female, ITR 1, 2, 3 and 4 is applicable, 5 and 6 is not applicable. 5 is for the partnership firm, 6 is for private limited. So हमें 1 से लेके 4 तक ही चूज करना है. Now we will see कौन सा हमें चूज करना है. As I told you, I have salary income, I have one house property and I have saving interest or FD income. अगर ये 3 चीज है, then I will file only ITR 1. My salary income is less than 50 lakh rupees, तब मैं ITR 1 पर जाऊंगा. अगर यही salary income exceeding 50 lakh rupees है, then I cannot file ITR 1. I have to file ITR 2. इसी तरीके से I have 2 house property, तो I have to file ITR 2. लेकिन अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है तो आई विल फाइल ITR 1. Apart from saving or FD income, suppose that I got some dividend income, I got some lottery income, मतलब any other source of income से मुझे पैसा मिलता है apart from saving and FD, then I will not file ITR 1. Now let us see when we can file ITR 2 or 3. When my income, salary income is exceeding 50 lakh rupees in a year, I have one or more than one house property, saving account और उसके अलावा भी कोई इनकम है, मतलब कि first I have given the one criteria कि salary income more than 50 lakh rupees है, आपको ITR 2 चूज करना है, चाहे एक घर हो चाहे सिर्फ saving account हो. So there is the one criteria. Another, salary income is less than 50 lakh rupees, but you have one house property as well as the saving account interest, but you are the director or shareholder in private limited, तभी you have to file ITR. Sometimes what happened कि मेरे पिताजी ने एक प्राइवेट लिमिटेड खोला या मेरे किसी फ्रेंड ने खोला प्राइवेट लिमिटेड, एंड ही इज सेइंग कि मनीष मैं तेरे को डायरेक्टर बना देता हूँ या आई विल गिव द 2% शेयर या 5% शेयर. तो अगर ऐसा कुछ भी है इन प्राइवेट लिमिटेड आई एम शेयर होल्डर, देन आई हैव टू फाइल ITR. My salary is less than 50 lakh rupees, but I have एक से ज्यादा मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है जहां पर रेंटल इनकम आ रहा है या फिर आई एम रिजाइडिंग. ओके, सेविंग इंटरेस्ट है तब भी मेरे को ITR 2 फाइल करना है. सैलरी इनकम लेस देन 50 लाख रुपीस है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, सेविंग इंटरेस्ट है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव सम कैपिटल गेन, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड करके हो सकता है, दैट कैपिटल गेन फ्रॉम
म्यूचुअल फंड हो सकता है, इक्विटी से हो सकता है। अगर कुछ भी ऐसा कैपिटल गेन होता है तो आई हैव टू फाइल ITR 2। Again, my salary income is less than 50 lakh rupees, one house property, saving interest है, but I have some business income or commission income. Suppose that I am the part of any insurance company जहाँ से मुझे कुछ इनकम आता है, या I am part of any mutual fund company जहाँ से I am getting some commission, और my one of the friend who is doing the business, और उसके यहाँ पर मैंने उसका कुछ सेल इंक्रीज कर दिया, I have given some client to him, then he has given some commission to me. अगर ऐसा कुछ भी होता है, या apart from job I am doing my business consultancy. Suppose that I am chartered accountant and I am doing proper job in private limited, and apart from that in evening time I am giving some tuition to any student, whether it is the 10th plus 2 graduation or any student. So this income will be considered as business income, और यहाँ पर मैं 50 लाख से कम भी सैलरी होने के बावजूद I cannot file ITR 1, I have to file ITR 3, because if I have the commission income or I have business income, I cannot file ITR 1, I cannot file ITR 2, I have to file only ITR 3 or ITR 4. ठीक है? Now, if you have any question related to income tax, ITR, you can ask, because whatever I have to say, I have to give some knowledge to you, I have to make some awareness to you. ये मैंने कर दिया है. So if you want to ask any personal question or any question related to you, your family, your friend, you can ask.